Hello and welcome to WeLearn. This is session 14 of Product Management Physical Distribution of a Product. Topic to be covered: Product Introduction, Product Architecture, Industrial Designing in the Product Development, Product Prototyping, and Concurrent Engineering. Introduction. Yes, in this session of the physical development of the product, we will going to giving the understanding about that what exactly the product is, how the product is created, the overall structure of the product. Is it required to being developing the overall structure or getting the blueprint of that particular product? तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम इस सेशन में डिस्कशंस कर रहे हैं. So in that case, सबसे पहला thing which comes into the slide is the physical development of a product concept would include number of a step like defining a product architecture, developing industrial design for meeting the expectations of the consumer, as well as the incorporating the product manufacturability, prototyping for evaluating the product physically and testing the product for the consumers and trade acceptably in terms of कि फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि प्रोडक्ट आपका एक्चुअली कंसीडर करने लाइक है कि नहीं, इज देवर दी एक्सेप्टेंस फ्रॉम दी कंज्यूमर साइड और नॉट. दैट इज़ वाई इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर डिफाइन करना, जैसे एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रिपेयर करना, जैसे एक वी कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर, किस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उन चीज़ों को कंसीडर करना. एट द सेम टाइम टेस्ट योर ओन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस और द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स. एंड येस, फॉलोइंग द वेरियस गाइडलाइंस ऑफ द ट्रेड. बिजनेस करते वक्त कुछ प्रोडक्ट की कुछ एक्सेप्टेंस होती हैं, कुछ फ्लॉज होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फॉलो, तो उन्हें कंसीडर करना. दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइनिंग द फिजिकल डेवलपमेंट. In that case, now the first thought which comes in our mind कि product architecture होता क्या है, what exactly the product architecture is. So हम इसे ये बोल सकते हैं कि it is the arrangement of the functional element of the product into the physical blocks. In terms of ये एक अरेंजमेंट होता है, हमारे जितने भी फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितनी भी टास्क एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए करनी होती हैं, वो एक्चुअली अकर होनी शुरू हो जाती हैं. दैट मीन्स इट इज़ वर्ड कि आप एक डिज़ाइन डिफाइन करते हो और उसके बाद यू एक्चुअली स्टार्ट परफॉर्मिंग दैट. A product architecture which emerged during the concept development in the scratch function design and a proof of the concept of prototype. In terms of ये एक overall concept बताता है. It is what basically defining the development of the कि आपने क्या blueprint या sketch क्या कौन सा आपने prepare किया है कि किस तरीके से आपका product prepare होगा, and yes at the same time कितनी activities आपने इसके अंदर define की हैं, and what are the exactly the proof of a concept of your prototype. The architecture design are basically finalized after the product concept is selected. Yes, that's very obvious कि एक business जो है वो तभी काम करना शुरू करेगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो तभी काम परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी जब एक कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्ट का वो अप्रूव हो गया होता है. अदरवाइज डिज़ाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग, स्केचिंग, फंक्शनल एक्टिविटीज़, दे आर एक्चुअली अ वेरी कॉस्ट कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस. So what are the main purpose of the product architecture? Architecture का main product क्या है? Yeah, we can say that main purpose क्या है? सबसे पहला तो it's to define the basic physical building block of the product in terms of what they do and what they interface are to the rest of the device. In terms of कि इसका basic concept ये है कि what are the physical blocks of the product in the terms कि किस किस तरीके के एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड लाइंड अप होंगी, एंड व्हाट दे एक्चुअली डू वो क्या करेंगी, एंड व्हाट दे वर इंटरफेस, दैट मीन्स क्या चेंजेस वो एक्चुअली लेकर आएंगे. सो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अलाउ द डिटेल्ड डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ दीज building block to be assigned to the terms individual and of the suppliers, such that the development of different portions of the product can be carried out simultaneously. In terms of it is what allow the detailed designing, एक detailed testing होती है, detailed designing होती है about the blocks to be assigned. That means about the work to be assigned to the individual or the suppliers. And in that case, these are what the development of a different portions of the product which is carried out in the processes.
So in that case, yes, a product can be thought of in both functional and physical terms, and it is what the kind of, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक फंक्शनल एंड फिजिकल टर्म्स दोनों का ही यूज़ होता है. दी फंक्शनल एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं आर दी इंडिविजुअल ऑपरेशंस, ये एक इंडिविजुअल ऑपरेशंस होते हैं, एंड दे वर दी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि एक प्रोडक्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के अंदर काम करने में एक एक्टिविटी, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इनिशियल लेने पे काम आते हैं. ये एक इंडिविजुअल ऑपरेशंस होते हैं, ये इंडिविजुअल वर्क्स होते हैं विच आर worked as the transformation which help overall helping the performance of product. Another functional element are usually described in the symmetric form before they are reduced to the specific technologies and components and physical working principle. So it is what basically reduce the specific technologies, component or physical working principles for that particular task. So product art, जैसा कि हम जानते हैं फंक्शनल एलिमेंट इज़ फ्रॉम द इंडिविजुअल साइड, कि उसका एक कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल ऑपरेशंस क्या हैं, वो किस तरीके की काम परफॉर्म कर रहा है ताकि ओवरऑल प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आ सके. सो इन दैट केस फिजिकल एलिमेंट्स आर मोर रिलेटेड टू द पार्ट्स, कंपोनेंट और सम sub assembling that ultimately implement the product functions. It is what basically the defining the product या पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट की डिस्कशंस की जाती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी सब असेंबलिंग्स क्या हैं. सो द फिजिकल एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट आर टिपिकली ऑर्गेनाइज इनटू दी सेवरल मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स. इट इज़ व्हाट कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स से एक बनकर बनता है. दैट ब्लॉक कुड बी अ क्रंच और दैट कुड बी अ टाइम ऑफ मॉड्यूल्स. सो अ मॉड्यूल आर्किटेक्चर इज फॉलोइंग द टू प्रॉपर्टीज़. इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जब हम लोग मॉड्यूल आर्किटेक्चर की बात करते हैं. क्रंच इम्प्लीमेंट वन और अ फ्यू फंक्शनल एलिमेंट इन देयर एंटायरली इन टर्म्स ऑफ उस पूरे एंटायर एंटिटी के अंदर उसके जो फंक्शनल एलिमेंट हैं दे कुड बी वन और अ फ्यू, and the interaction between the crunch are well defined and are generally fundable to the primary functions of the product. So the main objective of the module architecture is an integral architecture, and it exhibits the following properties. That means it is what building out the following properties. Functional elements of the product are implemented using more than one crunch. So a single crunch implement many functional elements, and yes, the interactions between the crunch are ill-defined and may be incidentally to the primary functions of the product. So in that, there was the another topic arises which is the product changes, यानी कि किस तरीके के प्रोडक्ट, इट इज़ वॉट किस तरीके के जो चेंजेस हैं एक्चुअली अकर हो सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दी प्रोडक्ट चेंजेस आर. सो प्रोडक्ट चेंजेस में अगर किसी भी तरीके के चेंजेस कर रहे हैं तो सबसे पहला होगा दी आर्किटेक्ट डिफाइन हाउ दी क्रंच रिलेट टू द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. उसके किसी तरीके के फंक्शंस या मॉड्यूल्स में चेंजेस लेके आना. तो व्हाट आर दी बेसिक सिनेरियोज और बेसिक मोटिव ऑफ ब्रिंगिंग दैट प्रोडक्ट चेंज, वो प्रोडक्ट चेंज लाने के बेसिक मोटो या बेसिक सिनेरियोज क्या होंगे, जिसमें सबसे पहला है द अपग्रेडिंग. अपग्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल वन, दैट एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और यू नीड टू एड अप दी और अपग्रेड योर प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो एक चेंज चाहेगा या एक उसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन डिफाइन करना पड़ेगा. Another is add-on. Add-on may be that many products are sold by the manufacturer and as in a basic unit. So in which the user add the components, often produced by the third party as needed. In terms of it is kind of mass storage device like compact disk driver can be add to the basic computer. So this is what the add-on. कि आप अपने प्रोडक्ट में किसी तरीके की एक्स्ट्रा वैल्यू एड ऑन करके दे रहे हो. Another is adoption process. Adoption is what the some long-lived product may be used in different use environments requiring the adaptations. In terms of it is what कि जब एक proper adaptation process देखा जाता है कि एक product किस तरीके से actually adopt किया जा रहा है. Another is wear and tear. Wear and tear is what the physical element of the product may be decorated with the use necessities, replacement of worn, and yes, at the same time the working on the extend the useful life of the product. Another is consumption. Consumption is what the some product consume material which can be easily replenished. So in that case it is consumption. Flexibility in use, when the some products can be configured by the user to exhibit the different capabilities. So that comes into the flexibility in use. Another is reuse. Reuse is basically in creating the
subsequent product, the firm may change only a few functioning element while retaining the rest of the product inactive. So that is what the reuse kind of product. So in that case we come to know that कि product change की requirement actually कब कब और कहाँ कहाँ पड़ सकती है. So then another is again the taking care of all that cases जो भी हम लोगों ने study किए. So the module architecture basically allows the firm to minimize the physical changes. तो जितने भी हमारे module architectures होते हैं, these all are functional one. जहाँ हमने product change की बात की थी वो सारे functional थे. Module के अंदर जब बात करते हैं तो किस तरीके के changes या किस तरीके की अकर्स होते हैं, फिजिकल चेंजेस अकर होते हैं. इन दैट केस सबसे पहले प्रोडक्ट वेराइटी. वेराइटी इज अ रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट मॉडल द फर्म प्रोड्यूस विद इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट डिमांड. दैट मीन्स मार्केट डिमांड को ध्यान में रखते हुए जब आप एक प्रोडक्ट के साथ का बिल्कुल ही सिमिलर प्रोडक्ट विद डिफरेंट ऑफ कलर जो है आप एक वेराइटी लेकर आते हो. दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट वेराइटी इज. We can say that like watch manufacturers usually retain the same inner machines so for their watches, but they create a variety in the dial, color, size, shape in case of wristband. So this is what the outer look only. And another is component standards. Component standards are basically, this refers to the use of some components in the multiple product. If a crunch implement only one or a few widely, so the function element, then its crunch will be standardized in terms of that bringing out the standardization kind of a same components देना, same crunch देना multiple product में, तो वो एक component standard हो जाता है. Another is product performance. Product performance basically refers to how well a product implements its intended function. That means कि किस तरीके से ultimately जो main function है उस एक product का वो किस तरीके से पूरा होता है. And it could be yes affected by the other factors also कि आप other factors कितने भी include कर लो, but the basic function is the performance and it should be fulfilled properly. So then in that case, yes, there was few industrial design in the product development. Product development करते वक्त बहुत सारे industrial design आते हैं. We can say that industrial design is the professional service of creating and developing the concept and specification that optimize the functioning, value and appearing of a product and system for the mutual benefits of both the users and manufacturers. That means उनके mutual decisions को ध्यान में रखते हुए, उनके mutual फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए जब किसी भी तरीके की प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज किया जाता है या सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट चेंज किया जाता है, और इट कुड बी स्पेसिफिकेशंस दैट ऑप्टिमाइज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. 5 critical goals are the utilities. Utilities भी एक critical goal में आता है. That is the product human interface should be safe, easy to use and intuitive. That means every feature should be shaped so that it communicates its functions to the user. It is what the utility concept. And another is appearance concept. Appearance is what form, line, proportion and color are used in the integrating the product into a pleasing whole. And it is easy to maintain. It is what the product must also be designed according to the tools and the production cost to be maintained and repaired. Then low cost, it is what the form and the features have a large impact on the tooling and production cost. So those may be considered jointly by the term. Another is communication. It is what the product design should be communicated to the corporate designing philosophies and mission through the visual qualities of the product. Now the next thing arises, what are the importance of industrial design? एक industrial design की क्या importance होते हैं? So we can say that yes, in the ergonomic needs, it is what the convenient means for assessing the importance of ID to the particular product is to characterize the importance along with the two dimensions, that is the ergonomic and the aesthetics. In terms of कि एक ergonomic अनदर इज एथोटिक्स जो हैं, एक दो तरीके की डायमेंशंस होती हैं प्रोडक्ट के अंदर जो कि एक प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती है. एर्गोनॉमिक इज ऑल अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट रिलेट टू इट्स ह्यूमन इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ दैट कि कैसे उसको ह्यूमन जो है वो एक यूजेज लेगा. इट कुड बी यूज विद द हेल्प ऑफ ईज टू यूज़, मतलब कितना ईजी है या कितना फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्ट जो है यूज़ हो सकता है.
ईज़ ऑफ मेंटेनेंस, कितना ईजी है उसको मेंटेन करना, लाइक अगर बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ रही है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर, सो दैट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट, so automatically it's not in a friendly one. Another is the user interactions in terms of that have with the product, that means कितनी interactions उसके साथ होती हैं, and the more the product will depends on the ID. And another is novelty of the user's interactions needed in terms of a novel use interface may require the substantial research and feasibility studies, such as building in the trackballs in the first mixed of a power book. In terms of that is what, to bringing out the building of or to flexible studies. Another is safety in usage. Safety in usage is all about defining the significant challenges to use that particular product. In the another one, the aesthetics need, which is very much related to now the aesthetics need, which is very much related to the product differentiation. That means it is key how product is actually differentiate itself in the terms of technology, in terms of identification, in terms of the concept of recognizing it, and the pride of ownership, image and fashion, how it actually relate to or associate to the status of that product. That means कि एक प्राइस, एक प्रोडक्ट को ख़रीदने पर आपको क्या प्राइड, क्या इमेज और क्या फैशन आप स्ट्रेंथ करते हो, या आप क्या क्रिएट करते हो, हाउ मच इट्स मेक्स यू स्टाइलिश, हाउ मच इट्स मेक्स यू द प्राइडफुल. Another is motivation to the industrial designers. That is what a product that is aesthetically appealing can generate a sense of a pride amongst the design and manufacturing staff. So it motivates and unify everyone associated with it. So yes, there is the process of industrial design development. Industrial design development का पूरा एक process है. सबसे पहले तो process के अंदर the first steps come into generating the information about the consumer need. It is required to understand about the consumer needs कि consumer needs हैं क्या. Another is conceptualization of the product to meet the consumer needs. आप उस पर जो एक need है उसको concept में कैसे convert करेंगे, how you able to consider that particular kind of need. Another is the product concept refinement. Product concept refinement is like what exactly the product the organization have. Another is concept screening and selection. किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट एंड स्क्रीन हो रहा है, दैट मीन्स उसको चेक करना एंड देन फाइनली उनको चेक करने के बाद सिलेक्ट करना उसको, देन फाइनली उसको डेवलप करना, and that is what developing the control drawing, and then integrating the different functions like engineering, manufacturing and vendor in the designing development. In that case, yes, the generation, we can say that it is what basically about generating the information about the consumer needs. It is what conceptual of product to meet the consumer. Refinement, product driven, development, control, technology use, that's all comes into this. Then what is product prototyping? Prototyping is basically defined as the approximation of a product along one or more dimensions of interest. So that means you were taking the estimations of the thing. That is the prototyping. So any entity that exhibits some aspects of the product that is of the interest of the product development team can be viewed as a prototyping, and it includes the concept of the bringing out the estimation. So in that case there were the two type of prototypes. सबसे पहले है the physical prototype. It is what are tangible artifacts created to approximate the product. ये tangible artifacts होते हैं which is created to approximate the product. Another is analytical prototype, which is represent the product in the intangible using mathematical manner. In terms of जो tangible manners में product के बारे में और product का estimations लेते हो, और जो intangible तरीके से product का estimation लेते हो, that's all comes into the analytical prototype. What are the uses of prototype? Prototype are always used to organization for learn about the product concept, make them able to communicate them. Another is to help them to integrating them and bringing out the milestones also. Now, what are the principles of a prototyping? Analytical prototyping are generally more flexible than the physical prototype. As an analytical prototype, it's mathematically approximation of the product, and it will generally contain the parameters that can be valid in the order to represent and design the alternative. And yes, at the same time, it also larger changes than
it could be made in the physical prototype. So that is what the analytical prototype and physical prototype both are required with the two dimensions, and to be performed in the organization, make the product little flexible. In terms of physical prototype are required to detect the unanticipated phenomena. It is what the often exhibit the unanticipated phenomena completely unrelated to original objectives to the prototype. Another is physical prototype, which is intended to investigate purely geometric issues, will also have a thermal and operational properties. So a prototype may reduce the risk of the cost in irradiation, and in many situations the outcome of the test may be detected whether a development task will have to be repeated. The analytical benefits of the prototype is reducing the risk must be weighted against the time and weight required to build the evaluation the product prototype. Now, what is concurrent engineering? It is what the engineers working on the technical point fail to detect the error at the designing stage at the tooling. So, the production, testing, and assembling stage is what the concurrent engineering. It is what the kind of design, or we can say that engineers when find the defect or the error in the design stage, and yes, at the tool they just try to rectify that particular error. So that was the communication gap between the willingness and cooperate amongst the various departments are to be the main problem. So in that case, yes, a new comparative method is was needed to minimize the time loss and minimize the unnecessary expenses and increase the independent cooperation. So टाइम कम लेना, टाइम लॉस होना, या किसी भी तरीके से अननेसेसरी उसको एक्सपीरियंस करना, मैक्सिमाइज dependency interdependency hona. It is what the systematic approach to the integrated concurrent design of the product and related process. So the main aim is to reduce the product development cycle terms, therefore the proper integration of the activities and processes across the department. So yes, there are few questions which you have to do it yourself. First is explain the price of the typing. Another is explain the importance of design prototyping. So that is what industrial prototyping. So you have to define about the two questions. So yes, we are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.